Need for partnerships. Faisal Bari. Dawn Editorial. Published on December 9, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. In the last couple of articles in this paper, I have talked a fair bit about how state and society are failing badly in providing the necessary resources, infrastructure, and support to children with disabilities and their families. In addition, I have also talked about how societal attitudes towards children with disabilities and their families add to the difficulties these families face in getting the necessary opportunities for children in general, but especially in education. These opportunities are the right of children with disabilities, as they are the right of any child, but they are not provided. In the provision gap, a chasm, really, that is present, there are some not-for-profit providers that have stepped in to provide some level of service. I want to talk of not only the service and its quality that they are providing, but also of some opportunities for leveraging their work that might allow us to scale up provision. Our research work is still largely Lahore-based and has not yet covered all the challenges that children face, but we have come across some amazing organizations working in the sector. I will name the few we have seen so far: Aziz Jahan Trust School for the Blind, Rising Sun School for Special Children, Deaf Reach, Inayat Foundation, Hamza Foundation, and Karachi Down Syndrome Program. This article is not about these organizations. It is about some of the commonalities that I saw across them and how they can be utilized to create larger interventions. All of the above are not-for-profit organizations. All of them work through donations raised from society, whether from one individual or many, and provide services to children at very subsidized rates or free of cost. Even when they work to their limit, the totality of their programming cannot reach all children who need the required service and support. But there are a few things to note. The state can leverage the expertise of nonprofits to provide services to children with disabilities. The dedication of the founder/directors of these programs and of the staff that works there impresses you as soon as you enter their premises and meet them. This dedication translates into significant commitment too. Though the staff complain of shortage of resources, here too the complaints are not as vociferous as one hears from their counterparts in government institutions, nor do these complaints become issues of disenfranchisement, nor lead to disappointment and dejection and lowering of morale. To the contrary, the narrative is more about trying to find ways of managing even within the given resources and how this might lead to ingenuity. The quality of services provided by these not-for-profit organizations is much higher than what we have so far seen in government institutions. This is the case in typical, mainstream, schools and educational institutions too. There has been a narrative about how private schools provide higher quality education than public schools. And this is not just true of elite schools, even middle-fee private schools do better than most public schools and, on average, even low-fee private schools are considered, by most parents, to be providing better education than public schools. This is true of many not-for-profit providers of education in mainstream education as well. Care Foundation and the Citizens Foundation are examples. The same is true in the area of provision of educational and other services for children with disabilities. Their provision is of a much higher standard than what is available across most public sector institutions. It is also the case that some of these institutions have developed expertise in the provision of services in particular areas that is beyond what counterpart institutions in the public sector have been able to develop. This is tied to the quality of provision argument given here. Whether it is because these institutions are more focused, involve people who are committed to work in particular areas, parents of children facing a particular challenge, dedicated to fewer areas, better resourced, or because of some other reason, their expertise is a lot more visible in their practice and provision of services to children. One difference from the mainstream education sector, where services for children with disabilities are concerned, is that there are no for-profit providers in this market. Mainstream education has a lot of them,
40% or so of enrolled children in Pakistan go to private schools, and most of these schools are for-profit providers. There is no equivalent of this where educational services for children with disabilities are concerned. This might just be because of the smaller number of children and due to the geographical spread of children. There are tremendous opportunities for collaboration and expansion available here. Can the state leverage the dedication, commitment, drive, expertise, and provision of quality service of the above-mentioned and similar organizations to expand the provision of services to children with disabilities and their families? If the state is willing to A. provide some resources to these organizations, grants, and B. create innovative partnerships between state institutions, mainstream schools as well as specialized institutions, and these organizations, we could see the expansion of quality services for children who desperately need them. The state keeps arguing that it does not have enough resources to provide quality education to all children. The argument for the paucity of resources is even more stark for children with disabilities. We know from the data we have that though approximately 15% of our children face challenges, state institutions' outreach is limited to a very small fraction of these. There are providers who are giving good quality services to children with disabilities. Should the state not try to leverage their expertise to extend services to children and families whom the state cannot reach? Given the paucity of resources, this might be the best way of extending services to more children with disabilities. The writer is a senior research fellow at the Institute of Development and Economic Alternatives, and an associate professor of economics at LUMS. Published in Dawn, December 9, 2022. For more videos, subscribe. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. इस मकाले के आखिरी चंद मज़ामीन में मैंने इस बारे में काफ़ी बात की है कि किस तरह रियासत और मुआशरा माजूर बच्चों और उनके अहल खाना को ज़रूरी वसाइल, बुनियादी ढांचे और मदद फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। इसके अलावा मैंने इस बारे में भी बात की है कि किस तरह माजूर बच्चों और उनके ख़ानदानों के बारे में मुआशरती रवैयों ने उन ख़ानदानों को आम तौर पर लेकिन ख़ास तौर पर तालीम में बच्चों के लिए ज़रूरी मौक़े हासिल करने में मुश्किलात में इजाफ़ा किया है। यह मौक़े माजूर बच्चों का हक है, क्योंकि ये किसी भी बच्चे का हक है, लेकिन उन्हें फराहम नहीं किया जाता। फराहमी खला में एक खलीज वाकई जो मौजूद है, कुछ गैर मुनाफा बख्श फराहम करने वाले हैं जिन्होंने कुछ सतह की खिदमत फराहम करने के लिए कदम उठाया है। मैं न सिर्फ इस सर्विस और उसके मेयार के बारे में बात करना चाहता हूं जो वो फराहम कर रहे हैं, बल्कि उनके काम से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ मौक़े भी हैं जो हमें फराहमी को बढ़ाने की इजाज़त दे सकते हैं। हमारा तहक़ीक़ी काम अब भी ज़्यादातर लाहौर पर मबनी है और अभी तक बच्चों को दरपेश तमाम चैलेंजों का अहाता नहीं किया गया है, लेकिन हमने इस शोबे में काम करने वाली कुछ हैरत अंगेज़ तंजीमों को देखा है। अजीज़, जहाँ ट्रस्ट स्कूल फॉर दी ब्लाइंड, राइजिंग सन स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, डेफ रीच, इनायत फाउंडेशन, हमजा फाउंडेशन और कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम। ये मजमून इन तंजीमों के बारे में नहीं है। ये इन मुश्तरकात में से कुछ के बारे में है जो मैंने उनमें देखा और उन्हें बड़े पैमाने पर मुदाखलत पैदा करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़कूरा बाला तमाम गैर मुनाफा बख्श तंजीमें हैं। ये सब मुआशरे से जमा किए गए अतियात के जरिए काम करते हैं, चाहे वो एक फर्द से हों या बहुत से, और बच्चों को बहुत रियायती नरखों पर मुफ्त में खिदमात फराहम करते हैं। यहाँ तक कि जब वो अपनी हद तक काम करते हैं तो उनकी प्रोग्रामिंग की मजमूई तौर पर उन तमाम बच्चों तक नहीं पहुँच सकती है जिन्हें मतलूबा खिदमत और मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन नोट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। रियासत माजूर बच्चों को खिदमात फराहम करने के लिए गैर मुनाफा बख्श इदारों की महारत से फ़ायदा उठा सकती है। इन प्रोग्रामों के बानी / डायरेक्टर्स और वहाँ काम करने वाले आमले की लगन आपको मुतासिर करती है जैसे ही आप उनके अहाते में दाखिल होते हैं और उनसे मिलते हैं। ये लगन भी अहम अज़्म में तर्जुमा करती है। अगरचे अमला वसाइल की कमी की शिकायत करता है, लेकिन यहाँ भी शिकायत इतनी ज़ोरदार नहीं हैं जितनी सरकारी इदारों में उनके हम मनसबों से सुनी जाती हैं। न ही ये शिकायत महरूमी का मसला बनती हैं
और न ही मायूसी और हौसले पस्त करने का बाइस बनती है। इसके बरक्स बयानिया दिए गए वसाइल के अंदर भी इंतजाम के तरीकों को तलाश करने की कोशिश करने के बारे में ज्यादा है और ये किस तरह आसानी का बाइस बन सकता है। इन गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के जरिया फराहम की जाने वाली खदमात का मेयार इससे कहीं ज्यादा है जो हमने अब तक सरकारी इदारों में देखा है। आम मेन स्ट्रीम स्कूलों और तालीमी इदारों में भी ऐसा ही होता है। इस बारे में एक बयानिया मौजूद है कि किस तरह निजी स्कूल सरकारी स्कूलों के मुकाबले में आला मेयार की तालीम फराहम करते हैं। और यह सिर्फ अशराफिया के स्कूलों के बारे में सच नहीं है, यहाँ तक कि मिडिल फीस निजी स्कूल भी ज्यादातर सरकारी स्कूलों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं और औसतन यहाँ तक कि कम फीस वाले निजी स्कूलों को भी ज्यादातर वालिदैन की तरफ से सरकारी स्कूलों के मुकाबले में बेहतर तालीम फराहम करने के लिए समझा जाता है। मरकजी धारे की तालीम में तालीम के बहुत से गैर मुनाफा बख्श फराहम कुनिंदगान के बारे में भी ये सच है। केयर फाउंडेशन और दी सिटीजन फाउंडेशन इसकी मिसालें हैं। माजूर बच्चों के लिए तालीमी और दीगर खदमात की फराहमी के शोबे में भी यही सच है। उनकी फराहमी ज्यादातर सरकारी शोबे के इदारों में दस्तयाब सहूलियात के मुकाबले में कहीं ज्यादा आला मेयार की है। ये भी मामला है कि उनमें से कुछ इदारों ने मखसूस शुबों में खदमात की फराहमी में महारत हासिल की है जो अवामी शोबे में हम मनसब इदारों की तरक्की से कहीं ज्यादा है। ये यहाँ दी गई फराहमी की दलील के मेयार से जुड़ा हुआ है। चाहे इसकी वजह यह हो कि ये इदारे ज्यादा तवज्जो मरकूज करते हैं, इन लोगों को शामिल करते हैं जो मखसूस इलाकों में काम करने के लिए पुरज़्म हैं, किसी खास चैलेंज का सामना करने वाले बच्चों के वालिदैन, कम इलाकों के लिए वक्फ, बेहतर वसाइला किसी और वजह से उनकी महारत उनकी मश्क और बच्चों को खिदमात की फराहमी में बहुत ज्यादा नजर आती है। मरकजी धारे के तालीमी शोबे से एक फर्क जहां माजूर बच्चों के लिए खिदमात का ताल्लुक है, यह है कि इस मार्केट में कोई मुनाफा बख्श फराहम कुनिंदा नहीं। मरकजी धारे की तालीम में उनमें से बहुत से हैं। पाकिस्तान में दाखिला लेने वाले 40% इससे ज्यादा बच्चे निजी स्कूलों में जाते हैं और उनमें से ज्यादातर स्कूल मुनाफा बख्श फराहम करने वाले हैं। जहां तक माजूर बच्चों के लिए तालीमी खदमात का ताल्लुक है तो इसके बराबर कोई नहीं है। यह सिर्फ बच्चों की कम तादाद और बच्चों के जोग्राफियाई फैलाव की वजह से हो सकता है। यहाँ ताउन और तौसी के जबरदस्त मौके दस्तयाब हैं। क्या रियासत माजूर बच्चों और उनके अहल खाना को खिदमात की फराहमी को वसअत देने के लिए मज़कूरा बाला और इसी तरह की तंजीमों की लगन, वाबस्तगी, ड्राइव, महारत और मियारी खिदमात की फराहमी से फ़ायदा उठा सकती है? अगर रियासत इन तंजीमों ग्रांट्स को कुछ वसाइल फराहम करने के लिए तैयार है और के रियासती इदारों, मरकजी धारे के स्कूलों के साथ साथ खुसूसी इदारों और उन तंजीमों के दरमियान जदीद शराकत दारी पैदा करती है, तो हम इन बच्चों के लिए मियारी खिदमात की तौसी देख सकते हैं जिन्हें उनकी अशद ज़रूरत है। रियासत ये दलील देती रहती है कि इसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो तमाम बच्चों को मियारी तालीम फराहम कर सके। वसाइल की कमी की दलील माजूर बच्चों के लिए और भी ज्यादा सख्त है। हमारे पास मौजूद अदाद और शुमार से हम जानते हैं कि अगरचे हमारे तकरीबन 15% बच्चों को चैलेंजों का सामना है, लेकिन रियासती इदारों की रसाई इनमें से एक बहुत ही कम हिस्से तक महदूद है। ऐसे फराहम कुनिंदगान मौजूद हैं जो माजूर बच्चों को अच्छे मेयार की खिदमात फराहम कर रहे हैं। क्या रियासत को उन बच्चों और ख़ानदानों को खिदमात फराहम करने के लिए अपनी महारत से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन तक रियासत नहीं पहुंच सकती है? वसाइल की कमी को देखते हुए ये माजूर बच्चों को खिदमात फराहम करने का बेहतरीन तरीका हो सकता है। मज़मून निगार इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स में सीनियर रिसर्च फेलो और लम्स में मुआशियात के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डान अखबार में शाये शुदा 9 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.